हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री 1500 1870 AD तक। ये स्टूडेंट्स जैसे आपका पेपर आना है उसी तरह से ये प्रिपेयर किए गए हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस के वीडियो यहीं पे देख सकते हो। कुछ पंजाबी मीडियम में और हिंदी मीडियम में भी इनको बना दिया जाएगा। जैसे आपकी डिमांड हो मैसेज ज़रूर कर देना। सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसमें से 9 का आपने आंसर देना है। 2 मार्क्स ये ईच होंगे, 18 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मर्चेंटलिज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन ऑफ रिफॉर्मेशन। एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय क्रूसेड्स, व्हेन वर दे फॉट। एंड देन विच प्लेस वाज नॉन एज टॉम ऑफ नेशन इन फ्रांस एंड वाई। हु वाज मारी एंटोनेट। व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टैम्प एक्ट। नेम 2 books written by Montesquieu. And then name the 4 leaders of Vienna Congress of 1815. And then when and by whom safety lamp was discovered. And then which country was known as the sick man of Europe. And then do you know about Carbonary Society. And next, who was Garibaldi. And next, what was Joloverin. And then write 2 causes of crime war. Next, when did Bismarck become the Prime Minister of Prussia. And who was the Persian emperor at that time. What do you mean by feudalism. And then 2 features of feudalism. And next, where and by whom mercantilism was used firstly. And then what is meant by Renaissance. And then write any 2 causes for the rise of a Renaissance. Who invented law of gravitation. What was the Grand Remonstrance. Who was Greenwale. And who was Freemasons. Write any 2 effects of continental system. And then write 2 demerits of Vienna Treaty. And then explain 2 principles of Vienna Congress. And next, who invented power loom. And then write 2 social effects of industrial revolution. And then write any 2 causes of Crimean War. And then who was Joseph Mazzini. And next, who was Cavour. And then what do you understand by Carbonary Society. And then what is meant by feudalism. And next, explain 2 causes of the rise of Renaissance. And name the writer of Divine Comedy. And next, write down 2 aims of reformation. And next, who was Mazarin. And then what do you mean by edicts of Nantes. And then who was Boston Tea Party. And next, name 2 important philosophers who influenced French Revolution of 1789. What was continental system. And then explain 2 aims of Vienna Congress. And next, who invented power loom machine and when. And then define Eastern question and mention 2 main causes of Crimean War. And then write down 2 hurdles before the unification of Germany. And then name the writer of Divine Comedy. And next, what was Boston Tea Party. And then what do you mean by continental system. And next, write down 2 causes of the downfall of Napoleon. Who invented spinning jenny and when. And next, write down 2 causes to become the industrial revolution in England. And next, when unification of Germany was completed. Write down 2 problems before the unification of Italy. And next, write 2 features of mercantilism. And then who was the leader of the Reformation in Germany. When was he born. And next, why was Louis XIV known as the child of miracle. And then when Stamp Act was passed by British Parliament. Who was the King of England at that time. And next, who was Marie Antoinette. And next, what do you know about Freemasons. And next, what were views of Napoleon about religion. And next, who was Menshikov. And then how did Crimean War helping originating
the Red Cross Society. And next, what do you know about Carbonary Society, and which policy was adopted by Bismarck for the unification of Germany. And next, who was Voltaire? Name his 2 books. स्टूडेंट्स ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का आपने आंसर देना होगा। 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इनको भी यूनिट वाइज ही क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं। सबसे पहले है व्हाट वाज फ्यूडलिज्म, डिस्कस इट्स फीचर्स एंड कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन। स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसी में से पेपर आपका आना होता है और इन क्वेश्चंस को मोल्ड करके पेपर में डाला जा सकता है, तो उसको समझ के उसका आंसर आपने ध्यान से देना होगा। नेक्स्ट है गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन फ्यूडलिज्म, एग्जामिन द मेन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ रिनाइसेंस and give a detailed account of Renaissance, and give a detailed note on Reformation, and then examine the causes responsible for the glorious revolution of 1688, and then examine the main causes and effects for the glorious revolution of 1688, and then write the causes for the rise of mercantilism and discuss its impact, and then trace the growth of absolutism in Prussia under Frederick the Great, and then trace the growth of absolutism in France, and then what do you know about Renaissance, and then examine its social and cultural effects on the life of the people of Europe, and then critically explain the causes and results of glorious revolution of 1688. Unit 2, discuss the main causes and consequences of the American Revolution, and then discuss the main causes and consequences of ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एंड नेक्स्ट इसको निकाल देते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है examine of the French Revolution of 1789. And next question है discuss in detail the causes and impact of the French Revolution of 1789. And then what was the immediate and permanent result of French Revolution of 1789? And then what do you understand by Napoleon's internal reforms? And then discuss the social, political and economic causes of American Revolution. And then what do you understand by Napoleon's continental system? Discuss its impact, effects and causes of its failure. And then critically examine the effects of the French Revolution of 1789 on French and Europe. Unit 3 के long questions. Give a critical analysis of the work of the Vienna Congress of 1815 and discuss the main provisions of the Treaty of Vienna 1815. Examine the significance of the treaty also. What do you know about the Congress of Vienna 1815? And next, what do you mean by Industrial Revolution? Discuss the social and economic effects of Industrial Revolution and discuss its new inventions. And then what do you understand by Industrial Revolution? Discuss its origin, progress and impact on various countries of Europe. And then explain in detail the origin and effects of Industrial Revolution in Europe. And then what do you know about the settlement of Vienna? And write the provisions of Vienna settlement. And next, discuss the causes and results of Crimean War. And then examine in the causes, course and consequences of the Crimean War. यूनिट 4 जिसमें आपको एक मैप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से जैसे 4th यूनिट में जो आता है उसमें से होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड देन गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एंड देन गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी and give a detailed note on unification of Italy, and Bismarck was the real architect of the German Empire. Discuss. इसके अलावा एक मैप का क्वेश्चन होगा। आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। अगर मैप करते हो इसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़े कट हो जाते हैं।
सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको ये मैप का क्वेश्चन लास्ट में ये करना चाहिए। इसमें आपको 5 प्लेसेस फिल करने के लिए बोला जाएगा और 4 के ऊपर आपने एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना होगा। 2 मार्क्स ईच, ये 4 का 8 मार्क्स का हो जाएगा और 5 प्लेसेस है वो भी 2 मार्क्स ईच होंगे और 10 मार्क्स का, वो टोटल मिला के 18 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपका ही हो जाएगा। इसमें ये प्लेसेस आपने अच्छे से कर लेनी है। इसी में से आपके ये पूछे जाएंगे: लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, मॉस्को, वियना, क्राइमी, वाटरलू, ट्राइकर, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, विनाइस, बॉन, बुदापेस्ट, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। स्टूडेंट्स, ये थे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। इसका सिलेबस का वीडियो अलग से आप देख सकते हो। अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करना। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।